Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's lecture, which we are going to do now, is very important as a matter of fact. We are talking about communication. What? Communication. So it's so important that we can make it a wonderful lot of lectures on this one. And as much as you get a command over this, actually you are the successful person in the world. So basically, these are all the things you have to learn from here. Okay, communication. One is the special paper you IELTS people do spoken. That's also communication. But overall, throughout in your life, what's important? How you communicate with other persons. So that's so important, right? So when we talk about communication, basically it's a tool to connect the people. And many issues and the many problems of the which are concerned with the man, they're directly linked with your level of communication. As better you do it, as better you achieve your goal in your life. So always be conscious about it, right? So when we say that, for this purpose, you need correct guidance and self-analysis. You see yourself whether you are doing well, either you are performing well in a nice way, and when you will have this analysis and the proper guidance, it will be wonderful, I believe. Am I right? So basically, it's interaction to exchange information, body gesture, signs, symbols, and expressions. So these basically they are all linked with this communication, right? We find that this and our whole social relationship and the any organization, its discipline, its betterness, they always are depending on communication. So how important it is, you can well think about it. It could be of different kinds, as you see. It could be verbal, what? Verbal and non-verbal, written, visual, or listening. So these are all the means by which, these are the tools which we daily apply in our communication whenever ever we have to communicate with others, right? So we communicate the people we want. What? We communicate the people we want. And it's a golden rule. What? But what's important more than this one, that communicate the people they want. What? Communicate the people they want. अब लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या आपसे तवक्के करते हैं? क्या आप उसको ऑब्जर्व करके आपने देखा कि मुझे इस मौके के ऊपर, इस जगह के ऊपर, इन हालात में मुझे क्या बात करनी चाहिए, मुझे कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट? सो ये प्लैटिनम रूल है, प्लैटिनम, राइट? ये गोल्डन से ज्यादा बेहतर है, इट्स मच बेटर. मुझे अफसोस है अभी तक मेरे साथ हुआ बड़ा ये इंसिडेंट हैपेंड विद मी कि मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, तो एक बुजुर्ग इंसान मैंने करीब देखे, मैं सोच रहा था वो सारा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कहाँ घर था, इनका दरवाजा क्या है, वो सारे आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट. तो वो मैंने एक बुजुर्ग इंसान देखे, तो मुझे हुआ कि इनके साथ में जरा एक्सचेंज करो. वो आए मेरे साथ, बोलने लगे, तो वो कहने लगे नहीं 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 आप फालतू बातें छोड़े, ये आप बेकार बातें सोचते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले, घर से निकले और जाके कोई भाई ये जो है वो घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको बाहर निकलना होगा अल्लाह के रास्ते में. तो वो थे तबलीगी जमात. तो अब बात तो ठीक कह रहे थे. मैंने कहा जी 6 नुकात मुझे याद है, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन ये कोई ऐसा कि निकलो घर से बाहर. मैंने कहा हजूर मैं निकला हूं ना, और कैसे निकलूं, घर से निकल के इधर मदीना शरीफ में आया हूं ना.
तो वो बात तो कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो मौका के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, व्हाट डिड आई वांट, ही वाज नॉट डूइंग लाइक दैट। तो ये होता है, आप बेशुमार जगहों पे वो बात करते हैं जो होती बड़ी सही है, लेकिन मौके उसके गलत होते हैं, लिहाजा वो इम्पैक्ट उसका क्या होगा। मैंने थोड़ी सी उनका वो किया, बाद में मैं क्या, मुझे मिले, मैं उनसे माजरत चाहूं, लेकिन फिर नहीं मिले। Well, so this is very important. Communicate the people they want. उनसे उनकी देख के, and it's all due to observation. What? We see that we call pen is the tongue of. Yes. और खुद दिमाग तो नहीं बोलेगा बेचारा, it can't speak. It can only think, it can only observe, it can only analyze the things. इसमें एनालिसिस होता है। ये तो नहीं बोलेगा, ये तो नहीं बात करेगा, तो किससे बात करेगा? अब जो कोई बंदा लिखता है, दैट इज एक्चुअली टंग ऑफ। यस, सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू राइट? दैट्स नॉट सिंपल। आपके दिमाग से होकर वो सारी नर्व्स और सारा जाके हाथ पे जो जाता है, और हाथ फिर उसको क्या खूबसूरत अंदाज से लिखता है। बेसिकली वो सारा दिमाग का मैसेज होता है जो लिख रहा होता है। So इसको हम नहीं समझ सकते। Well, hearing skill and observation. What? So this is very important. समाज सुनना जो है, ये listening skill है फुल। आप कितने इन्हेमाक के साथ, कितने जो है वो प्रॉपर तरीके से कोई बात सुनते हैं किसी, तो जब आप कमाल अच्छे अंदाज से सुनते हैं, आधा कैथारसिस तो उस बंदे का दूर हो जाता है। आप मसले को हल करें ना करें, दैट्स अनदर मैटर, लेकिन जब कोई बात करता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते। वी आर नॉट पेइंग आवर फुल अटेंशन, बस सती गुजर जाती। दैट्स नॉट गुड। इज इट गुड? नो, इट्स नॉट गुड। और फिर हमारे यहां क्या है? ऑब्जर्वेशन। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ। इससे क्या हो रहा है? इससे कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है। व्हाट डिड आई से? कम्युनिकेशन गैप। अब टीचर जो है स्टूडेंट से बात कर रहा है, टीचर स्टूडेंट्स को नहीं समझ रहा और स्टूडेंट टीचर को नहीं समझ रहे। अब बाप और बेटा, बाप क्या चाहता है वो बेटा नहीं समझ रहा, और बेटा क्या चाहता है बाप नहीं। इसी तरह मियां बीवी से क्या चाहता है, बीवी खामद से क्या चाहती है। बीच में क्या है? कम्युनिकेशन गैप। And unfortunately, it is increasing day by day. Closing की बजाय ये फैल रहा है. It's going more and more. So in this way, you see that ये सारी चीजें जो है, ये communication नहीं है तो फिर it's a failure of life. What did I say? It is failure of life. Failure of life. जिंदगी फिर आगे तो नहीं चलेगी. So इससे क्या होता है? ट्रस्ट गेन करते हैं हम लोगों का अपना किसी के ऊपर, और इससे हमें अपॉर्चुनिटीज नॉक होती हैं। वी नॉक न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ। किससे? कम्युनिकेशन से। यस, और यही स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी भी है। एज मच एज यू बेटर डू इट, यू आर मोर स्ट्रांग पर्सन, राइट। और यहां क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज 20%? यू नो, ये 20% है सिर्फ जो आप जानते हैं, वट एवर यू नो, एंड 80% वट यू फील। और ये फीलिंग तो निकल गई हमारे बीच में कोई भी। वी डोंट फील इट, वी डोंट। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज पढ़ते हैं, दैट्स कभी फील की ना। हम कुरान पढ़ते हैं सिर्फ, उसको फील किया? मतलब पढ़ के भी हमने कभी फील नहीं किया, कहा क्या उसकी फीलिंग्स क्या है। सो हाउ कैन वी कम्युनिकेट वेल until unless we know these all things, right? It could be our first lecture, we can develop it to the next, right? So I believe you must have enjoyed. Did you enjoy it? Yes, sir. Okay, see you then inshallah.